Welcome to the lecture series on engineering mathematics. I am Dr. Mohammad Mazharul Haq. We have started Laplace transform in engineering mathematics and some standard functions Laplace transform we had find in the previous lecture. So today we will continue that same. हमने previous lecture में जो देखा था उसी को continue करेंगे. So today's objective is with the help of Laplace transform what we'll do is find the standard functions Laplace transform. ऑलरेडी हमने जो देखे हैं उसके बाद कुछ और एडिशनल जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे. सो ऑलरेडी व्हाट वी हैव सीन विल रिकॉल दैट. पहले हमने डेफिनेशन देखी. द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट द इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st दैट फंक्शन dt. ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st f of t dt को हमने लैप्लास बोला. This Laplace of function already we has taken and this also we has defined like capital F of s. इसको हमने F of s भी बोला, right? So with the help of this definition हमने क्या किया, standard functions के Laplace find out करने की कोशिश की. So what we got is Laplace of 1 as 1 by s. 1 को यहाँ पे F of t की पोजीशन पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको ये स्टैंडर्ड वैल्यू मिली. So 1 by s we got Laplace of 1. So here onwards, whenever Laplace of 1 we want, we'll use 1 by s. In the same way, e raised to at का हमको Laplace मिला 1 by s minus a. So Laplace of e raised to at is 1 by s minus a. Likewise, e raised to minus at Laplace is 1 by s plus a. In the same way, Laplace of c raised to at 1 upon s minus a log c. So these are very simple. 1 by s minus a is the Laplace of e raised to at. 1 by s plus a is Laplace of e raised to minus at. अगर ये एक याद रखेंगे तो ये तीनों हमको याद हो जाएंगे. Laplace of 1 is 1 by s. We have to remember all this. ये हमको याद रहना ज़रूरी है. So we'll continue with the help of definition some more standard functions. So the most popular trigonometrical function sine, we'll see f of t as sine at. So what we'll do is in place of f of t in the definition of Laplace हम क्या करेंगे, sin at को सब्सटीट्यूट कर देंगे. So what is the definition? Laplace of f of t is nothing but the integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt, right? So in place of f of t you will substitute the given function sin at. Sin Laplace of sin at 0 to infinity e raised to minus st sin at dt. So if you observe, what is our goal? Finding the Laplace means what? To find the value of this integral. ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है. So when we are observing this integral involves e raised to minus st as one function, sin at as another function, product of these two functions. But if you observe, this is a standard Laplace, this is the standard integration. See, e raised to ax sin vx dx. ये इस इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास. The value of such type of integration is e raised to ax as it is divided by the coefficient of exponential a square plus coefficient of this sine b square, and in bracket a this coefficient of exponential term and this sine vx as it is minus this coefficient of another function b and cos bx, sine का अपोजिट cos bx. So we'll do the same. यहाँ पे a की पोजीशन पे क्या है, माइनस s, और b की पोजीशन पे a है. तो यहाँ पे सिर्फ a की पोजीशन को चेंज कर देंगे माइनस s से और b की पोजीशन को a से चेंज करेंगे. x के पोजीशन पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऑफ दिस इंटीग्रेशन वी आर टेकिंग t. So just replace this. So if we replace e raised to minus st will be as it is, coefficient of exponential term minus s square, coefficient of this sine a square, s square plus a square, a coefficient of exponential term that is minus s, sin at as it is, sin vx, so sin at, minus as it is coefficient of this, so coefficient of this is a and cos of at. So this is the value of the standard integral 0 to infinity e raised to minus st sin at dt. Now what we have to do is only just substitute the upper limit and lower limit. Because why? Because the integration is 0 to infinity. ये क्यों करना है? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 to infinity
So just substitute upper limit infinity in place of the variable t and lower limit 0 in place of the variable t. So if we substitute e raised to minus infinity, we know is 0. So this total term will be 0. And when we substitute 0 in place of t, so e raised to 0 is 1. So upper limit e raised to minus infinity is 0. So this total term is 0. Now e raised to 0 minus lower limit e raised to 0 1. 1 upon s square plus a square minus s sin इन प्लेस ऑफ टी वी आर सब्सटीट्यूटिंग. वेरिएबल की पोजीशन पे सिर्फ ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना रहता है हमको. सो इन प्लेस ऑफ टी इफ वी सब्सटीट्यूट लोअर लिमिट 0, सो साइन 0 इज 0 एंड माइनस ए कॉस 0 दैट इज 1. सो दिस टोटल टर्म माइनस एस इंटू 0 इज 0 and this minus a and this minus plus. No need to write 0. So Laplace of sin 80 we got a upon s square plus a square. So here onwards whenever Laplace of sin 80 we require, जब भी हमको sin 80 लगेगा, what we write, just we'll see the coefficient a, whatever is in place of a upon s square plus a square. a की पोजीशन पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा ऑब्वियसली, 1 upon s square plus 1. So अभी मैंने क्या किया, वापस से एक बार रिवाइज करता हूँ. एफ ऑफ टी की पोजीशन पे हमने साइन 80 रखा, राइट, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज़ करके हमने ई रेस टू माइनस एस टी साइन 80 की वैल्यू रखी, इंटीग्रेशन की वैल्यू, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा. अपर लिमिट ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, सो दिस टोटल टर्म इज 0, लोअर टर्म 0 रखा है, सो दिस टर्म गिव्स अस दिस वैल्यू. सो लैप्लास ऑफ साइन 80 हमको स्टैंडर्ड मिल गया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इन द सिमिलर वे देयर इज अनदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos 80. विल डू द सेम फॉर दिस cos 80. इन द डेफिनेशन में हम एफ ऑफ टी की पोजीशन पे cos 80 रखेंगे. सो लैप्लास ऑफ cos 80 इन दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की पोजीशन पे cos 80 रखा हमने. वी डिड द सेम एंड अगेन वी हैव फॉर दिस इंटीग्रल. ये इंटीग्रल के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब दो प्रोडक्ट में एक एक्सपोनेंशियल है और दूसरा कॉस है, तो ये रिजल्ट है हमारे पास ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स. ई रेस टू ए एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल टर्म का कोएफिशिएंट, कॉस का कोएफिशिएंट, और इन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट कॉस एज इट इज, प्लस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस रहेगा, और कॉस का कोएफिशिएंट प्लस अपोजिट ऑफ दिस कॉस साइन. सो इन प्लेस ऑफ ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिमिलर माइनस एस, और इन प्लेस ऑफ बी ए. तो सेम अभी जैसे हमने किया था उसी टाइप में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. सो ई रेस टू माइनस एस टी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर दैट इज माइनस एस स्क्वायर, माइनस स्क्वायर 1 पॉजिटिव रहता है, माइनस स्क्वायर प्लस, सो एस स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, एस स्क्वायर प्लस in place of b we have a, so a square, and a that is in place of a minus s cos 80 as it is, plus in place of this b we have a sin 80. सेम सिचुएशन इज देयर, इन्फिनिटी रख देंगे यहाँ पे t की पोजीशन पे, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0, so this total term is 0, so this total term is 0 and e raised to 0 1, so e raised to 0 1 upon s square plus a square and cos 0 that is 1 minus s into 1 sin 0 that is 0. So this term will be 0. Why? This sin 0 is 0, so this mistake is there, this must be plus. No need to worry about this. यहाँ पे 0 हो रहा है इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं है. This term is 0 minus s into 1 and this if we multiply, this term is 0, no need to write this term is 0, so minus s into minus this 1 that is plus. So we got the value of this Laplace of cos 80 as s upon s square plus a square, provided this s must be greater than 0. ये restrictions हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये लेस देन, ये अगर निगेटिव हो गया तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जो 0 यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे. ई रेस टू अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इंटीग्रली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट. सो दिस एस मस्ट बी पॉजिटिव. व्हाट वी डिड, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में. एफ ऑफ टी की पोजीशन पे कॉस को रखा हमने और ये वाले रिजल्ट को यूज़ किया इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स. ये वाले रिजल्ट को यूज़ करने पे हमको क्या मिला,
e raised to minus st upon s square plus a square and this term minus s cos 80 plus a sin 80. फिर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा है हमने सिर्फ और वैल्यूज यूज किए e raised to minus infinity 0 तो ये पूरी टर्म 0 e raised to 0 1 सो दिस 1 अपॉन दिस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ये ब्रैकेट से हमको माइनस एस मिला so s upon s square plus a square. So this is the another standard value of Laplace we got. So when from here onwards whenever cos 80 या फिर cos का टर्म रहेगा Laplace of cos we will use s upon s square plus whatever is the coefficient. यहाँ पे a की पोजीशन पे जो भी आएगा so s upon s square plus a square. So this is the another standard Laplace transform we got. So we'll add these two values. Laplace of 1 we got 1 by s. Laplace of e raised to 80 we got 1 by s minus a. Already we got this, so we'll add this Laplace of sin 80 as a upon s square plus a square, s is greater than 0 and Laplace of cos 80 as s upon s square plus a square. So we are going slow but you must remember all this. हम slow क्यों जा रहे हैं ये आप लोगों को याद रहना ज़रूरी है. ये जब तक याद नहीं होंगे you cannot even solve the Laplace problems. तो जब भी यहाँ पे Laplace of 1 रहेगा you must very carefully write 1 by s. डायरेक्टली यू हैव टू राइट आउट दिस. आपको याद फौरन याद आना चाहिए कि लैप्लास ऑफ ई रेस टू 80 इज 1 बाय एस माइनस ए. ई रेस टू माइनस 80 का लैप्लास 1 बाय एस प्लस ए. सी रेस टू 80 इसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखेंगे बट यू मस्ट रिमेंबर दिस. सी रेस टू 80 1 बाय एस माइनस ए लॉग सी. लैप्लास ऑफ साइन 80 अभी जो देखा हमने ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये साइन का जो कोएफिशिएंट है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लाइकवाइज लैप्लास ऑफ कॉस 80 यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों के डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओनली साइन के टर्म में क्या आ रहा है ए आ रहा है. कॉस की टर्म में एस आ रहा है. राइट. सो दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शंस. विल कंटिन्यू दिस. विल टेक सम मोर स्टैंडर्ड फंक्शंस बट बिफोर दैट रिमेंबर ऑल दिस. इसको याद रख लो. उसके बाद हम इसके बेस एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. पहले कुछ और एग्जाम्पल्स से पहले कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शंस भी देखेंगे. ठीक है. तो हमने आज क्या देखा. डेफिनेशंस को यूज करके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को का लैप्लास हमने फाइंड आउट किया. ठीक है. थैंक यू.